Dear friends, this webinar is all about, we are going to discuss the payment recovery methods through check bounce, Order 37 and MSME Act. We'll go through the brief for check bounces and Order 37 so that you have that idea. Yes, what is there in this webinar? See, basically, if you have any delayed payment issue, there are a lot of emotional, physical, and financial stresses which you go through. And we are going to discuss the legal options available for trader, manufacturers, and service providers. Knowledge and strategies, how you can get money back through different tools. We are going to discuss each and everything, including your invoices, your agreements, what problems you are going to face, and at times in check bounces or Order 37, you might not need assistance of advocate. You can handle it on your own to a certain extent, and how you can negotiate with your opposite party and come to the settlement terms. The calculation which you are going to tell to your opposite party who is not paying you, so that he is pretty much convinced to come to the terms and go for the settlement. In the end of this, we'll be having free bonuses. We are going to provide you sample demand notices for MSME, check bounces, and invoices and agreements. So here I am. I'm Advocate Manish Alak. My qualification is MBA Finance and Management plus LLB. I have experience for more than 20 years, and right now we are having more than 100 MSME running cases. We have a YouTube channel as well with 100+ videos, which are only dedicated to, which are only made on money recovery, dealing with check bounces cases, Order 37 and MSME Act. And these all videos are made on the basis on actual experiences. See, whatever the opposite, whatever questions has been asked on different platforms regarding this, these all videos are made on that. Yeah. Personal reason why I choose to expertise on money recovery is that my brother stuck into this money recovery thing, means money recovery in the sense that he has started a business of shoe manufacturing, and he has taken loans from private lenders, but because the rate of interest was pretty much high, 5%, 6%, so the vicious circle was made. And because of that, at one point of time, he was paying 1 lakh per month as a interest only. And apart from this, expenses were there. So ultimately, we were bound to sell our property. That particular moment, I took a call that this is a very serious issue in this particular business, because no businessman is so foolish that he is going to start a business in which he is going to get loss. The most recurring, or mostly the reason why businesses fail is, apart from natural calamities, is delayed payment or non-payment. So there's a lot of seriousness, serious issues if non-payment is being done in, your business, your personal life, your health is all goes on toss. And this particular webinar is going to help you in a very, very versatile manner. You are going to know that. Yes. We should understand if money recovery is there, then if that is personal or business, if you have check, either you are a business owner or in personal, then you have two options. You can go for
criminal offense, that is check bounce case under section 138 of MSME Act, plus you can file a civil suit as well. And if you don't have check, and if you are in manufacturing or services unit, you are a manufacturing or services unit, you can opt for MSME through that route, council, and or you can have that money recovery suit in normal. Plus you can file suitable criminal offense for that. Yes, if you don't have check in but you are not in manufacturing or services, then if you are trading or you're in personal, then what you have that option is you have to file a money recovery suit in district court initially, plus suitable criminal court, criminal suit, that is section like 420, 419, basically cheating case. Yes, first action which you should take, is make your invoices agreements strong and make a very clear and effective communication, and all these actions are going to pay you in timely payments. We are going to share you with the we are going to share the invoices with you, sample invoices. Now, what are the areas which you can write on your invoices? What are the points which you can add in your invoices about payment terms? That is, invoices are due within 15 days, like checks regarding that. Legal rules, invoices follow the MSME Act. Handling disputes that results in facilitation councils. Product conditions, communications and notices, compliances and liabilities. See, these all things are actually these one-liners. These one-liners are going to pay you in in a big way, because many cases are being settled on this. Suppose one example is there. One case was there in which check was check got dishonored, and the opposite party said that he has paid in that he has paid in cash, but he forgot to take back the check. Then the magistrate, the judge said that it is written on invoice in which you have signed that checks are subject to realization. So you have signed on it, means you knew about this fact that the check which you have given is going to get realized. So it was your duty to take back that check and then give the money. So these all one-liners are based on each and every case laws which is being settled. These are one-liners which you can add in your invoices, plus in your agreements, payment terms, legal framework, handling disputes, which we are going to provide you the samples of it. We are going to mail you in case you demand for it. Product conditions you can add on, compliances, liabilities, and communications and notices. Second action which you should take is regular and proactive follow-up with overdue payments. You just cannot afford to call your buyer after 3 months or 4 months about the payment. He is going to our experience says that your payment gets more delayed if you are not doing regular and proactive follow-ups. You can take the help of softwares like QuickBooks, Xerox, Xero, FreshBooks, etc., which actually manages that. And one more important thing,
this is the most common thing which happens. Your buyer gets, absconding after taking the money. So you can take help of skip tracing agencies for those debtors, those buyers who has just run away after, taking money from you. Yes, now comes the main part of it. How in this the main idea of this webinar is about professional help, which we are going to give you in this presentation about check bounces cases, uh, you know, at demand notice under section 138 of NI Act and calculation, which will convince your opposite party that, before going to any litigation, he will tell you that, come on, we can settle it. Case of check bounce case, it is compulsory that when you receive memo from the bank, from the bank along with a check, that this particular check is being bounced. So after receiving that memo from bank, within 30 days, you need to give him a demand notice. That demand notice can be given by an advocate or yourself. So I'll be explaining you what are the key points in demand notice which should be there. Either your advocate can give that demand notice, legal notice which is said, or that can be given by you. It is, it is a settled law that, that demand notice can be given by you as well. So in that particular demand notice, हम क्या करेंगे? सबसे पहले इंट्रोडक्शन करेंगे कि सबसे पहले वी आर गोइंग टू गिव इंट्रोडक्शन ऑफ द नेचर ऑफ द बिजनेस, कि वो हुआ क्या था, ट्रांजैक्शन क्या थी, डिटेल्स ऑफ द ट्रांजैक्शन और अमाउंट विच वाज ड्यू, एंड आफ्टर दैट कि किस डेट को आपका चेक नंबर था और कब एक्सपायर हुआ, कितने अमाउंट का था, लीगल एक्शन का you need to describe that this is a legal action which is being we are going to take on you, and after that specify the cost of the notices, and again you have to request that the important part is कि उनको ये बताना है कि 15 दिन के अंदर अंदर आपको ये अमाउंट आप अगर नहीं देते तो वी आर गोइंग फॉर litigation. And after when you give that, you need to give 15 days to him. After the expiry of 15 days, within 30 days, 30 days, आपको चेक बाउंस का केस जो है उसके ऊपर डालना। अब आती है जनाब कि your advocate is not there, and now you have to convince your opposite party जिसका चेक बाउंस हुआ है, you are in talking terms, उसको समझाना है कि it is better, we should not go for litigation. ये आपके लिए और नुकसानदेह होगा। कैसा होगा? We should discuss one by one. First, the accused is going to hire an advocate for expense of 15 to 20,000. In this particular example, the check amount I have taken is 2 lakhs. 2 लाख का चेक बाउंस हुआ, एक्यूज को कम से कम 15-20 हजार रुपए अपने एडवोकेट के लिए खर्चने ही पड़ेंगे जिसके ऊपर केस। सेकेंडली 10% का उसको बेल अमाउंट जो है वो डिपॉजिट करना होता है। 20 एडवोकेट की फीस, 20 आपका बेल अमाउंट, 40,000 तो यही हो गए। इसके बाद हमारे एक प्रोविजन होती है बिफोर स्टार्टिंग द प्रोसीडिंग्स, जब आप समनिंग करते हैं और वो कोर्ट में आता है, जब वो बेल वगैरह फर्निश करता है, तो देयर इज अ लॉ जिसके अंडर हम, मतलब जिसका चेक बाउंस हुआ है, जिसके ऊपर चेक बाउंस हुआ है, वो 20% ऑफ द चेक अमाउंट मांग सकते हैं फॉर इनिशियल एक्सपेंसेस। सो
जब हमें वो मिलता है, वो अप्रूव होता है, तो दैट कम्स अराउंड 40,000। तो कितना हो गया? 20,000 आपकी एडवोकेट की फीस हो गई, 20,000 आपकी बेल हो गई, 40,000 हो गया आपका दिस जो हम 20% एडवांस में उससे मांग सकते हैं, जो सेक्शन। उसको ये बताने की भाई 2 लाख रुपए का चेक बाउंस का केस है, 80,000 रुपए तो तेरे को तेरे पास से निकल ही गए केस स्टार्ट होने से पहले। प्लस whenever you are going to come to the hearing, the loss of business is there. Plus हमारी फेवर में जब ये वर्डिक्ट आएगा, that will be that can have 2 times of the check amount as a fine। मतलब अगर 2 लाख का आपका चेक बाउंस का केस है तो 2 लाख और फाइन लग सकता है, 4 लाख की लायबिलिटी हो सकती है इसके अंदर। प्लस अगर आपने नहीं दिया, एक्यूज ने नहीं दिया, उसको जेल हो सकती है, और जेल के आने के बाद भी उसकी जो लायबिलिटी है वो नहीं जाएगी। तो जब आपकी अपोजिट पार्टी को ये सिंपल कैलकुलेशन जब समझ में आती है, या 2 लाख का केस 80,000 तो मुझे वैसे ही देने हैं, इसके बाद मेरा रिस्क इन्वॉल्व है, ही इज गोइंग टू कम टू यू ऑन नेगोशिएशन टेबल। ये मैं बात बता रहा हूं आपको कि आपको एडवोकेट को इसमें इन्वॉल्व नहीं कर, क्योंकि एडवोकेट मोस्टली वो केस स्टार्ट कर देते हैं, उनका जो फायदा होता है वो होता है हियरिंग चालू रहे, तो उसमें उनका मीटर घूमता है। तो अगर आप ये चीज उसको समझा देते हैं तो आपका बार के चांसेस बढ़ जाते हैं सेटलमेंट टेबल पे आने की। नाउ कम्स कि in case you don't have that check but you are eligible for order 37, this is basically summary suit होता है, बेसिकली मनी रिकवरी सूट होता है, बट इसके हियरिंग्स बहुत कम होती है, 6 हियरिंग्स के अंदर खत्म हो जाता है। सो जल्दी खत्म होने वाला मनी रिकवरी सूट। तो इसके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। इफ यू आर ए ट्रेडर और अ मीडियम एंटरप्राइजेज, जो कि आप एमएसएमई में अगर नहीं आते और बट आपको चेक दिया है और प्रॉमिसरी नोट अगर दिया हुआ है, तो आप ये केस कर सकते हैं। इसके अंदर लीगल नोटिस देने की जरूरत नहीं होती। जब आप कोर्ट में ये एप्लीकेशन लगाते हैं, इफ कोर्ट फील्स दैट इट इज एडमिसिबल, देन someone needs to appear, and this particular form A appendix B, he needs to give that within 10 days basically। जब आप ये वाला ऑर्डर 37 केस कोर्ट में डालते हैं, एक समनिंग होती है, विद इन 10 डेज अपोजिट पार्टी को उसमें रिप्लाई देना होता है। अगर वो 10 दिन के अंदर रिप्लाई नहीं आता तो प्रोसीडिंग्स आगे बढ़ जाती है, मींस एक्स पार्टी डिक्लेरेशन की तरफ चली जाती है। और अगर उसका रिप्लाई आता है और उसने जो भी अपनी डिफेंस में कहा है, दैट कोर्ट फील्स की यार ये ठीक नहीं है, अप्रोप्रिएट नहीं है समरी सूट ट्रायल के लिए, मींस हमें चलाना चाहिए, तो वो आगे बढ़ता है उसी पे। और अगर समझती है कि उसने जो भी डिफेंस दी है तो वो डिफेंस इतनी है कि इसको नॉर्मल ट्रायल चलाया जा सकता है, देन तो वो नॉर्मल ट्रायल चला होना शुरू हो जाएगा उसके ऊपर, मींस वो नॉर्मल मनी रिकवरी सूट बन जाएगा। अदरवाइज ये ऑर्डर 37 मतलब समरी सूट बन जाएगा। नाउ इट डिपेंड्स ऑन योर एडवोकेट, जिसको आपने दिया है उसको कितनी नॉलेज है, कितना स्ट्रांगली पुट करता है, प्लस आपके केस के अंदर जो भी एविडेंसेस वगैरह है वो कितने स्ट्रांग है, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। बट दिस इज द मोस्ट प्रिफर्ड केस। अगर आपका चेक बाउंस हुआ है उसके बेसिस पे आप ऑर्डर 37 भी कर सकते हैं, बिकॉज चेक बाउंस इज अ क्रिमिनल ऑफेंस एंड दिस इज सिविल रिकवरी सूट। सो एक अगर जुर्म होता है उसमें एक ही तरीके के 2 केसेस नहीं कर सकते। मतलब एक अगर मान लीजिए कुछ क्राइम कमिट हुआ है, फाइनेंशियल दिस थिंग, तो उसमें 2 सिविल लिटिगेशंस नहीं डाल सकते सेम चीज पे, लेकिन एक क्रिमिनल एक सिविल डाल सकते। सो द चेक बाउंस इज अ क्रिमिनल ऑफेंस एंड दिस इज अ सिविल रिकवरी। दिस एक्चुअली जब आप
किसी के ऊपर 2 केस एक साथ डाल देते हैं और वो दोनों स्ट्रॉन्ग होते हैं, our experience is that 60 to 80% वो इनिशियली ही सेटल्ड हो जाता है। Let's move forward. Yes, ऑर्डर 37 डालने के फायदे क्या होते हैं? इफ ट्रांसफर टू नॉर्मल सूट, अगर वो जैसे कि एक्सप्लेन करा था, नॉर्मल सूट में अगर वो आपका ट्रांसफर हो जाता है, मींस चेंज हो जाता है, तो विद इन 30 डेज उसको रिप्लाई करना होता है और नॉर्मल प्रोसीडिंग्स हुए नॉर्मल सूट की वैसे चलती है। बट इफ कोर्ट इज नॉट सेटिस्फाइड विद द रिप्लाई, द जजमेंट विल बी गवर्न। एंड इसके अंदर अगर उसकी डिफेंस जो उसने दिया है रिटर्न के अंदर, कोर्ट इज नॉट सेटिस्फाइड, तो उसी वक्त जजमेंट दे दी जाती है और मोस्टली इसकी अपील भी नहीं होती। इसी के बेसिस पे आगे केस जो है मोर और लेस आपके इसमें डिसाइड हो जाता है। एंड एविडेंस बाय द वे ऑफ व्हाट्सएप वॉइस रिकॉर्डिंग नंबर हाइलाइट्स, दिस मींस एविडेंसेस जो आपके व्हाट्सएप की कम्युनिकेशन है वो एज अ एविडेंस इसके अंदर मानी जाती है। इफ डिफेंडेंट डज नॉट हैव सस्टेनेबल प्रूफ, मतलब बेसिकली ऑर्डर 37 की बात चल रही है कि अगर आपके अपोजिट पार्टी के पास कोई सॉलिड प्रूफ नहीं है तो आपकी फेवर में जजमेंट आ जाती है। इट इज द बेस्ट फॉर बिजनेस ट्रांजेक्शंस बिकॉज थिंग्स आर प्रीटी क्लियर। बिजनेस ट्रांजेक्शन के अंदर आपने माल दिया, इतना माल दिया, इसके पास पहुंचा, इसको इतना माल, इतना ये देना चाहिए था, इसने नहीं दिया, दैट्स इट। And a defendant has not right to apply for leave to defend, or if means कि अगर कोर्ट ने ये मान लिया, if court has decided कि ये particular जो भी डिफेंस उसने दिया है that is not that strong कि इसके ऊपर नॉर्मल सूट चलाया जाए, मींस समरी सूट ही चलाया जाए, तो समरी सूट ही चलता है इसके अंदर। इस प्रीटी फास्ट शॉर्टर डेट्स होती है इसके अंदर। ओरल एविडेंस इसमें अलाउड नहीं होता, चूंकि नॉर्मल लिटिगेशन अगर आप सिविल सूट में ढाते हैं तो वो चीज ऐड होती है, तो वो इसमें ओरल एविडेंसेस, मान लीजिए आपके मोस्टली, अब जैसे हमारा भी एक केस है उसके अंदर अभी हमने क्रॉस किया, तो जो उन्होंने लिखा भी नहीं था रिटर्न स्टेटमेंट में, तो अपोजिट पार्टी ने आके बोला मैंने तो कुछ माल दिया ही नहीं, ऐसा कुछ दिया ही नहीं, बट एविडेंस वाज काउंटेड, मींस उसकी वो रिकॉर्ड कर ली गई, लेकिन ऑर्डर 37 के अंदर वो काउंट ही नहीं की जाएगी ओरल एविडेंस। सो अनदर पॉइंट विच इज वेरी important is कि फाइनल जजमेंट ही होती है इसके अगेंस्ट, अपील भी नहीं होती। बिकॉज देखिए, अपील अगर आप करते हैं तो उसका एक स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए। अगर स्ट्रॉन्ग बेस नहीं है तो वो अपील भी एक्सेप्ट नहीं होती इसके अंदर, बिकॉज ऑलरेडी कोर्ट ने डिसाइड कर दिया है डिफरेंट पैरामीटर्स पे, तो अपील लेना भी मुश्किल हो जाता है। लेट्स मूव फॉरवर्ड। Now we are going to discuss about our main topic, which is MSME. See, this particular slide shows number of MSME registered in lakhs, and below it is given years. We have a data from 21 till 24. So we can see that in the year 2021, the MSME registration has gone from 25 lakhs, approximately 25 lakhs, to 2 crore, I think 25 crore or 2 crore 50 lakhs something. You can see the phenomenal rise in it. So what is the reason of it? कि पहले भी तो बिजनेस चल रहा था, ये MSME registrations जो हैं इतने ज्यादा क्यों हो गए? इतने ज्यादा इसलिए हो गए बिकॉज अगर आप समाधान पोर्टल में जाएंगे जो डिलेड पेमेंट्स की हैं, देन यू विल गेट टू नो उसके अंदर ईच एंड एवरी केसेस का जो कंप्लेंट्स MSME के अंदर आई हैं डिलेड पेमेंट्स की, उसका डेटा दिया हुआ है कि हाउ मेनी complaints has been lodged and how many are settled, how many are in process, and how many are rejected. So the result is very good. That is the reason
MSME registration has gone so much phenomenal high in the past 4 years. Yes, why MSME Development Act is very much needed for this money recovery thing. समझते हैं पहले ये this data is for last 20 years. Basically MSMEs are stressed out. ये वो चीज दर्शाता है. This particular data is regarding the credit demand. Basically लोन की जो डिमांड होती है MSME के थ्रू और लोन जितना दिया जाता है, लोन डिफॉल्ट है and NPAs. I should put it in this way. The first line after year which shows how much percentage loan is demanded. Suppose say 2004, 4% demanded loan, credit demand on credit basis. And the second line, credit supply. That means ki when the loan demanded was by 4% of MSMEs, the loan given was 2-3%, and loan default rate was 5%, and NPAs was 8%. We are talking of 2004. Now, after this gradual, all the things, in the year 2023, this comes 33% of MSME now looking for business loans. These basically credit loans. And out of it, the loan which is being sanctioned or which is being given is 22%. मतलब 33% जो 100 में से 33% जो MSMEs हैं उनको वो लोन चाहिए और 22% वो सैंक्शन हो रहा है और मींस 11% जो पहले 1% का डिफरेंस था. मतलब 100 में से अगर 4 लोग लोन मांगते थे तो 3 को मिल जाता था. अब वो रेशियो आ गई कि अब लोन की डिमांड बढ़ गई है, वो अब 33 लोग जो हैं वो लोन डिमांड करते हैं, उसमें से 22 को मिलता है. मींस 11% को लोन नहीं मिलता. लोन डिफॉल्ट रेट विच वाज एट 5%, 100 में से अगर 5 MSMEs जो पहले लोन डिफॉल्ट करते थे वो अब 15%. एनपीएस जो 8% था, 100 में से 8 लोग एनपीए होते थे, अब वो 16% हो गए. उसके रीजंस जो हैं which is being given. The point here we should understand in this graph as well. MSME की अगर आप क्रेडिट की वो देखेंगे, सबसे ऊपर वाली इज क्रेडिट डिमांड. कितने लोग क्रेडिट डिमांड कर रहे हैं वो देखिए आप कितना हाई जा रहा है. और जो सप्लाई है, क्रेडिट सप्लाई मींस जिनको लोन एक्चुअली में मिल रहा है, we'll see the gap has become huge. And the NPAs the ratio has also gone, upwards. Now we should discuss, हमने ये जो डेटा डिस्कस करा वो सबसे पहला इसलिए करा कि MSME का रजिस्ट्रेशन इसलिए हो रहा है ज्यादा बिकॉज डिलेड पेमेंट की जो प्रोविजंस हैं वो इफेक्टिव हो रही हैं. MSMEs को पता लग रहा है, which you can counter check from MSME समाधान पोर्टल. दूसरी चीज जो हमने MSMEs की जो माली हालत देखी कि लोन कितना मिलता है, कितने एनपीएस हो रहे हैं, वो भी देखा दैट वो बहुत फिनोमिनली जो है वो इंक्रीज हो रहे हैं. अभी इसके अंदर वो डेटा नहीं है कि एक्चुअली में जो प्राइवेट लेंडर से जाते हैं, ये सारा का सारा गवर्नमेंट और प्राइवेट जो बैंक्स हैं उनका डेटा है. तो MSMEs आर स्ट्रेस्ड आउट. नाउ वी शुड डिस्कस कि ये स्ट्रेस्ड आउट जो है वो किस वजह से होगा. डिलेड पेमेंट इज वन ऑफ द मेन रीजन. अब उसके लिए इन द ईयर 2006 MSME डेवलपमेंट एक्ट इंट्रोड्यूस किया था. तो अब इसलिए ज्यादा ये पॉपुलर हो रहा है बिकॉज द फैसिलिटेशन काउंसिल जो है वो अभी 2018-19 तक ही पूरी बन पाई है. बिकॉज इनिशियली व्हाट हैज हैपेंड कि लॉ तो बना दिया गया था लेकिन उसको कैटर करने के लिए जो काउंसिल बनाते हैं वो ही नहीं बना. वो हमारा 18-19 से बना है. दैट इज द रीजन
एकदम से वो स्पाइक हमें देखने को मिल रहा है इसकी पॉपुलैरिटी पे और इसके सक्सेस पे. So we should come to the main provisions of MSME Development Act 2006. See, first and foremost thing which is very important is Section 2B of MSME Development Act, which says that if no objection is given within 15 days of delivery of the goods manufacturer or the services given, then it will be considered as deemed acceptance. एक चीज और ऐड करना चाहूंगा कि ये जो एमएसएमई डेवलपमेंट एक्ट है ये डिलेड पेमेंट्स की, दिस अप्लाइज फॉर ओनली मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज प्रोवाइडर्स. तो अगर किसी ने अपना माल ये जो भी गुड्स उसने मैन्युफैक्चर करे या सर्विसेज दी, जब आपने डिलीवरी करी 15 दिन के अंदर अंदर अगर उसने रिटर्न में रिजेक्शन या ऑब्जेक्शन नहीं दिया, देन इट विल बी कंसिडर्ड एज डीम्ड एक्सेप्टेंस. अब वो चाहे सुप्रीम कोर्ट चला जाए तब भी वो इस चीज को अनडू नहीं कर सकता. वो हम आगे डिस्कस करेंगे कि व्हाई सो. Section 16 says after 45 days of delivery, compound interest of 3 times of RBI bank rate. RBI का बैंक रेट वो रेट होता है जिससे RBI कमर्शियल बैंक्स को लोन देता है. जैसे RBI अगर एक्सिस बैंक को लोन देते हैं ऑब्वियसली 5-6%, 4 से 6% के करीब होता है, उसका 3 गुना 3 times, and that too compounded monthly. That is, he needs to give. और इसके अंदर केस लॉ सुप्रीम कोर्ट के सेटल्ड केस लॉज हैं where the principal was 1 crore and the interest came 1.5 crore. तो opposite party reached to Supreme Court and Supreme Court said that nothing doing, whatever is given in MSME Act is a special act. जो इसमें लिख दिया है वही माना जाएगा, इसको हम चेंज नहीं कर सकते. एंड सेक्शन 19 इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट सेक्शन. सी, अगर आप कोई और केस करते हैं नॉर्मल लिटिगेशन, इफ यू गो एंड डू इट ऑन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सो सपोज से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आपने किया, आप जीत गए, लेकिन अगेन द अपोजिट पार्टी विल गो टू हाई कोर्ट एंड देन अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट. तो अपील के अंदर ऐसा कुछ तो है नहीं, जस्ट वो अपील लगाएंगे किसी न किसी बेस लॉ बेस पे लगाएंगे एंड दे विल लिंगरिंग ऑन दिस थिंग. बट अगर आपने एमएसएमई के अंदर केस डाला है, if that is decided arbitration में, जब आपके फेवर की डिग्री आ गई, जजमेंट आ गई, the opposite party for filing an appeal has to deposit 75% of interest and principal. तभी उसकी अपील जो है वो मानी जाएगी. अब इट्स वेरी सिंपल. सपोज से आपको 10 लाख रुपए उसको देने थे, आपका इंटरेस्ट के साथ बन गए 12 लाख. तो 12 लाख की डिग्री जजमेंट आपकी फेवर की आ गई, आपकी अपोजिट पार्टी उस पर अपील करना चाहेगी, तो 12 लाख का 75% कम अराउंड 9.5-10 लाख के करीब करीब, वो आपकी अपोजिट पार्टी नीड्स टू डिपॉजिट दैट 10 lakhs टू द हायर कोर्ट एंड तब उसकी अपील दायर करेगी. तो लिटरली ऐसा कोई नहीं करता. तो उससे बेटर है वो आपके पास आके कहेगा कि यार 8-9 लाख 10 लाख आप ही ले लो. उसके बाद लिटिगेशन और कोर्ट की फीस, हाई कोर्ट के एडवोकेट की फीस तो वैसे ही ज्यादा होती है. तो लिटरली आपकी जो अपोजिट पार्टी के लिए रास्ते बंद हो जाते हैं इसके अंदर. नेक्स्ट इज सेक्शन 23. इट इज दैट कि व्हाटएवर इंटरेस्ट, जो भी इंटरेस्ट हमने डिस्कस करा, जो इंटरेस्ट उसको देने का बनता है, जो भी वो देगा इंटरेस्ट, सपोज से उसने जो 1.5 करोड़, आगे वाले एग्जांपल में हमने पीछे वाले एग्जांपल में जैसे हमने डिस्कस करा था कि 1 करोड़ प्रिंसिपल था, 1.5 करोड़ जो है उसको इंटरेस्ट देना पड़ा था. अब ये इंटरेस्ट जो है वो आप एक्सपेंसेस के अंदर नहीं डाल सकते अकॉर्डिंग टू दिस. मीन्स कि अब 1.5 करोड़ उसने आपको दिया है, वो उसको अपनी बुक्स में एज अ प्रॉफिट ही, इनकम ही उसको रखना पड़ेगा, वो उसको एक्सपेंसेस काउंट नहीं कर सकता.
वन मोर थिंग, अभी इनकम टैक्स में बहुत इम्पोर्टेंट वो एक सेक्शन ऐड हुआ है, सेक्शन 43BH। इसके अंदर 31 मार्च तक जिसने भी एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर, if your opposite party has not paid you that money, then he cannot put that amount into expenses. We should take an example of it. Suppose, say you have given 5 lakhs of material to someone, and he needs to give you 5 lakhs, and till 31st March of that financial year, he has not given you that 5 lakhs. Now in the books of accounts, he cannot minus that, count it as his expense of purchases. He needs to add it in this particular income only. So अब उस amount के अंदर उसको ऊपर उसको अपना टैक्स भी देना पड़ेगा और उसको इसका सरचार्ज भी देना पड़ेगा, whatever जो भी इसके ऊपर जो भी चार्जेस होते हैं. And the most important जो सेक्शन है वो है सेक्शन 24. सेक्शन 24 says that section 15 to 23 of this MSME Development Act overrides to any other laws except IBC's law. मतलब अगर आपकी अपोजिट पार्टी इंसॉल्वेंसी में जा रही है, ये तभी सिर्फ नहीं माने जाएंगे, अदरवाइज जो एमएसएमई एक्ट में कह दिया गया है वो पत्थर की लकीर है. किसी और एक्ट में कुछ भी लिखा हो वो नहीं माना जाएगा. सो दिस पर्टिकुलर सेक्शन गिव्स यू इनफ पावर कि आपके ये जो पॉइंट्स लिखे गए हैं, मतलब ये जो पॉइंट्स हमने डिस्कस करे हैं, इस जो भी आपका केस है वो इसी के अकॉर्डिंग, इसी के इर्द गिर्द ही घूमेगा. लेट्स मूव फॉरवर्ड. अब इसके अंदर विल डिस्कस व्हाट आर दी बेसिकली प्रोसेस क्या रहेगा. ये तो आपने सेक्शंस जान लिए, हाउ यू आर गोइंग टू प्रोसीड. इसके अंदर सबसे पहले ऑनलाइन कंप्लेंट करनी होती है समाधान पोर्टल के अंदर. यू नीड टू अपलोड इनवॉइसेस लेजर ऑन समाधान पोर्टल. And one counter email goes to the opposite party as well. Recently, 2 months back, what has happened? There's one of our clients is Baba Housekeeping. We were representing that, and the claim was for 1 crore 20 lakhs. So we have filed online complaint. The online complaint goes to that opposite party. It was private limited party. Then and there, within 1 hour, he received that call from that buyer that you should not go ahead with this. We are going to settle that. तो opposite party ने 1 घंटे के अंदर इनको रीच कर दिया. Then they told कि please stop this. Then we made MOU, memorandum of understanding, for that, in which he agreed to pay 8 lakhs per month for that. और तब तक वो MSME की proceedings हम रुकवा दें. बट हमने ऐसा नहीं किया. हमने उसमें ये क्लॉज लिखा कि हम फ्रीज कर देते हैं. जब भी हमारी हियरिंग आई है हम वहां जाके बता देते हैं कि यस सेटलमेंट है, 8 लाख आ गए हैं लेकिन अभी नहीं आए, लेट मूव टू सेकंड, वेट फॉर सेकंड हियरिंग. सो सिर्फ पहले स्टेप का ही इतना डर होता है. वी हैव लाइव एग्जांपल्स फॉर ईच एंड एवरी स्टेप्स व्हिच वी आर गोइंग टू डिस्कस. तो ऑनलाइन कंप्लेंट करने के बाद व्हाट वी डू, we serve demand notice to opposite party. इसके अंदर basically on your letterhead we explain each and every sections of MSME Development Act which is being discussed in this previous slide. So according to all those sections where he stands plus case laws, so बेसिकली केस लॉज और इंटरेस्ट कैलकुलेशन शीट के साथ जब वो अपोजिट पार्टी के पास डिमांड नोटिस जाता है आपके लेटर हेड पे, देन उसका एक्चुअल में असर क्या आता है.
सी नॉर्मली व्हेनेवर किसी के पास कोई भी नोटिस आता है या कोई भी लिटिगेशन होती है, द फर्स्ट थिंग विच अ पर्सन डज इज दे अप्रोच any advocate or legal department of that particular company. So what they does, ठीक है हम हैंडल कर लेंगे, लेकिन हम इसके अंदर सारे सेक्शंस बता देते हैं, केस लॉ सेटल बताते हैं सुप्रीम कोर्ट्स के। अब आपने सुप्रीम कोर्ट के केस लॉज बता दिए, सेक्शंस बता दिए और बता दिया आप कहाँ लाई करते हैं। अब whenever this demand notice is received by is gone through by your opposite party, now when he reaches his legal department or any advocate, now he will not simply say कि यार मेरा केस लड़ दो। नाउ ही विल से कि सर ये बताओ इसका आंसर ठीक है क्या, कि 15 दिन के अंदर अंदर मुझे रिटर्न में देना चाहिए था, ये ठीक है क्या, ये 75% मुझे जमा कराना पड़ेगा, ये ठीक है क्या। नाउ कोई भी जो एडवोकेट, कोई भी लीगल आइडेंटिटी विल नेवर लाई दैट। तो then there itself they says कि yes whatever is written is right. So अब हम क्या करते हैं कि अपोजिट पार्टी के जो एडवोकेट या जो जिसके पास भी वो जाएगा, हम पहले ही ऐसा कर लेते हैं कि वो उसको मिसगाइड नहीं कर सकता कोई भी एडवोकेट, बिकॉज हमने उसको क्लैरिटी पहले ही दे दी। नाउ सेकेंड स्टेप व्हाट वी डू, वी सर्व लीगल नोटिस। सपोज से आपने डिमांड नोटिस दिया, उसने कोई रिवर्ट नहीं करा, उसको लग रहा है चुपचाप वो बैठा रहेगा तो थिंग्स विल मूव ऑन, मतलब नथिंग इज गोइंग टू हैपन। देन व्हेन वी सर्व लीगल नोटिस, हम फिर आगे ही कहानी बताते हैं उसको कि भाई साहब वो तो हमने बता दिया, लेकिन इफ यू think that if you are not reverting to us and if you are not going to take any action or not coming to our hearings, what we'll do is we'll do ex parte declaration. Ex parte declaration होता है कि अपोजिट पार्टी हियरिंग पे आ नहीं रही, उसी के बिहाफ पे मींस उसकी एब्सेंस के अंदर ही आपकी फेवर की जजमेंट आ जाती है। एंड आफ्टर एक्स पार्टी डिक्लेरेशन किस तरीके से आपके एसेट्स जो हैं वो अटैच होके उसकी जो भी आगे प्रोसेस होता है, लिक्विडेशन होता है, वो हम कैसे लेके जाएंगे, वो हम एक्सप्लेन करते हैं लीगल नोटिस के। सपोज से आपके मूवेबल एसेट्स जो हैं, वो कोई भी कार हो गई, एसी हो गया, वो कैसे कोर्ट के जो रिसीवर होते हैं, दे विल कम टू योर हाउस एंड पिक अप your AC or your car and just go away and उसकी ऑप्शन करके वो पैसा रियलाइज करेंगे। तो ये जब अपोजिट पार्टी को क्लैरिटी होती है कि यार ये तो बिल्कुल सर पे ही मुसीबत आई हुई है, then obviously he is going to take action and we have that example, live examples, many example daily हमारे पास ये चीज मतलब हम एक्सपीरियंस करते हैं कि किसी ना किसी एक ना एक स्टेज पे ऐसे हमारे कुछ ना कुछ आते रहते हैं। अब अगर मान लीजिए इस पे भी नहीं आता, देन नेक्स्ट स्टेप इज हार्ड कॉपी सबमिशन। वी हैव टू सबमिट हार्ड कॉपीज एट काउंसिल। उसमें एक नॉर्मल जैसे केस दाखिल होता है कोर्ट के अंदर, वैसे ही चीजें होती हैं, बट अकॉर्डिंग टू that facilitation council, the formalities are little different, but the crux is same. Suppose say Gujarat or Pune council is there, what they are demanding is all the same, but the format which they are demanding are different. So ultimately we do that, and then what happens is 3 conciliation hearings are must in case settlement is not being done. So facilitation council happens normally under the guidance of district magistrate. So 3 conciliation hearings होती हैं, बेसिकली उनको बुलाते हैं, बिठाते हैं कि आपस में समझाते हैं वो कि अपोजिट पार्टी को भी समझाते हैं कि ये लॉ है, इस तरीके से है, बेटर है यू शुड सेटल इट। तो अगर नहीं होता then this particular case goes to arbitration, रिस्पेक्टिव जो भी स्टेट का है। जैसे दिल्ली का जो आर्बिट्रेशन है वो दिल्ली हाई कोर्ट में होता है, मेरठ का आर्बिट्रेशन जो है वो वहीं पे ही उन्हीं के काउंसिल कर लेते हैं, डिफरेंट मेंबर्स कर लेते हैं।
और आर्बिट्रेशन के अंदर इट इज इट इज देयर, इसके अंदर लॉ वो है कि विद इन 12 months दे नीड टू रिजर्व द ऑर्डर एंड विद इन 18 months यू नीड टू प्रोनाउंस दैट। तो जब आपका आर्बिट्रेशन में गया, अब देखिए कोर्ट केस जब आप करते हैं नॉर्मल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, देयर इज नो टाइमलाइन, कुछ टाइमलाइन नहीं होती कि इतने साल में होगा, इतनी हियरिंग्स में होगा। बिकॉज होगा क्या कि एक हियरिंग में मजिस्ट्रेट नहीं आएंगे, एक हियरिंग में अपोजिट पार्टी नहीं आएगी, एक हियरिंग में कुछ ना कुछ ऐसा होगा। सो सॉरी। सो बट हियर द टाइमलाइन इज गिवन कि विद इन 12 months यू नीड टू रिजर्व द ऑर्डर, और अगर नहीं होता तो आर्बिट्रेटर जो है उनकी फीस कटती। सो इट इज बाउंड टू हैपन। Finally, it's a very quick resolution as compared to normal litigation. अब जो डिमांड नोटिस हम एमएसएमई बनाते हैं विल प्रोवाइड द सैंपल ऑफ इट एज वेल, बट just we can have a look on this that उसमें क्लियर कम्युनिकेशन होनी चाहिए कि उसका पर्पस क्या है, क्या ट्रांजैक्शन हुई, व्हाट वर दी एग्रीड टर्म्स। 15 जो हमने डिस्कस करा, 15 डेज का जो क्लॉज था, यू नीड टू एक्सप्लेन दैट। देन 15-16 सेक्शन जो बोलता है विद इन 45 days of your delivery you need to give interest that 2-3 times of RBI bank rate that comes around 16 to 20% monthly compounding. Then you need to you are going to tell that appeal thing means if you are planning for appeal, then 75% of principal or interest you need to deposit. Only then your appeal will be accepted. So these and after interest and that part means interest will not be included in your expenses. तो आप जो हमें इंटरेस्ट भी दोगे वो आपको एक्सपेंस ही, आपको डबल ही हमसे भी और ज्यादा महंगा पड़ेगा। मतलब आपको अपनी बुक्स में वो एक्सपेंसेस भी शो नहीं कर सकते, प्लस इस साल के उसमें तो कर ही नहीं सकते। देन आफ्टर दैट above all you need to tell him that section 24 that it supersedes any law apart from insolvency। अगर आपकी इंसॉल्वेंसी हो रही है तभी के तभी हम कुछ मतलब इसके अंदर ये चीजें अप्लाई नहीं होगी। अदरवाइज इन एनी अदर केस कोई और लॉ हो वो कोई अप्लाई नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट के सेटल्ड केसेस हैं इसके अंदर। दिस पर्टिकुलर whatever you we have told, this will go according, the judgment will go according to it only. So again, last you need to tell the urgency and request. So now don't let payments problem bog you down. Question and answer session, we are open for question and answers. Am I audible? Am I audible? Some problem with the audio or what? Um, am I audible? Again,
I think what has happened to audio? I'm logging again. Just wait. Is there any questions through participants? Can we start with the question answer round, please? I see Mr. Anil Shukla. Anil Shukla ji, please, you can ask your question and please unmute him, please. Is there anybody else who would like to ask? Meanwhile, Narayan ji, can you unmute Narayan ji? Am I audible? Yes, Manish ji, you are audible now. I was audible throughout. Yeah, you are audible throughout. Little confused. Should I start again? Any question answers? Yeah, I think Mr. Anil Shukla ji is there to ask a question. Yes, sir. Unmute Anil Shukla ji. Anil Shukla ji, please ask your question. मेरा भी आवाज आ रही है? जी सर, अनिल जी. मेरा क्वेश्चन ये था कि इसमें जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स जो बायर्स होते हैं, क्या वो भी कवर होते हैं? जी सर, और स्पेशली अगर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है तो फोर्टनाइटली इनकी जो रिपोर्ट है, जो भी समाधान पोर्टल पे इनके अगेंस्ट आप डालते हैं, वो पीएमओ ऑफिस जाती है एंड दे आर रिव्यू. आपकी आवाज फिर नहीं आ रही है. नाउ ऑडिबल? हाँ, अभी आ रही है. हाँ, सो व्हाट आई वाज सेइंग इज कि जो भी आप गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अगेंस्ट आप कंप्लेंट करते हैं, वो पीएमओ प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के फोर्टनाइटली, मतलब महीने में एक बार रिपोर्ट जाती है. एंड इसके अंदर जो उनके डायरेक्टर हैं वो पर्सनली उनको समनिंग होती है. इस पे समनिंग इन द सेंस कि इन केस अगर वो पेमेंट नहीं करते तो जो उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के डायरेक्टर हैं उनके पास ये ओनस जाता है फाइनली, अगर जजमेंट आपकी फेवर में जाती है. तो अगर ये मैंने पर्सनली ही देखा है कि अगर आपके गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, अगर आपने कंप्लेंट दी और प्रोसीडिंग स्टार्ट हो गई है, आई हैव सीन कि हालत खराब हो जाती है. तो एक्चुअली इट इज you know very beneficial if your opposite party is government. तो इसी रूट से जाना चाहिए. नहीं, लेकिन उसमें क्या सर, हमने लास्ट एक कंप्लेंट एक बार रेज की थी, हमारे पास उसका रिप्लाई ही 1 साल के बाद आया था. सर कौन मीन टाइम क्योंकि रेगुलर फॉलोअप हम कर ही रहे थे, तो मतलब करीब वो पेमेंट आया हमारा 8-9 महीने के बाद, लेकिन जब तक वो रिप्लाई आया तब तक वो सेटल हो चुका था. लेकिन इतना टाइम उसमें लग जाता है कि वो मतलब कोई उसका यूज नहीं रहता. सर विच काउंसिल आर यू टॉकिंग? कौन सा काउंसिल है जिसकी आप बात कर रहे हैं? कहाँ आपने कंप्लेंट करी थी, किस स्टेट में, और बताएंगे कौन सा सर? am I audible? Yes, you are audible. Yes. सर वो बताएंगे कि कौन सा काउंसिल है, कौन से स्टेट है और कौन सा काउंसिल है? I think he's not there. Okay. So we'll take up another question, or would you like to complete this? नहीं, ये बेसिकली काउंसिल पे डिपेंड करता है. और इसमें क्या करना चाहिए कि
ऑनलाइन कंप्लेंट जहां आपने करी है, जहां आपकी ज्यूरिसडिक्शन बन रही थी, आपको वहां पे उस पर्टिकुलर ऑफिस में जाके बात करनी चाहिए और उसका प्रोसेस पता करना चाहिए। तो मोस्ट प्रॉब्ली ये हो सकता है कि जब तक, जैसे मैंने बताया था, कि जब तक आप हार्ड कॉपी सबमिट नहीं करते, उनकी जो भी फीस है 3-3.5 हजार या व्हाटएवर जितनी भी फीस उस काउंसिल ने रखी हुई है, जब तक आप वो सबमिट नहीं करते तब तक वो केस में उसको ट्रांसफर नहीं करते और hearing start in UP. So I know that in UP, this is same culture. You need to give hard copies of your complaint along with the fees. हरियाणा में यही है, पुणे में भी यही है, आई थिंक महाराष्ट्र में भी यही है, एंड गुजरात में भी यही है, तो दिल्ली में नहीं है। सो इट डिपेंड्स, बट फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग आपको ये करना चाहिए कि वो पर्टिकुलर 15 दिन के बाद आप उस काउंसिल में जाके आप पता करो व्हाट इज द प्रोसेस लाइक। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। Next we have Karnal ji. Karnal sir, please you can ask your question. Can you unmute? Good evening, everyone. It's good evening, sir. Very educative webinar. I'm hearing it for the first time. Thank you, sir. In fact, there was a person. I'm into services. I'm into security and facility management. Mm-hmm. So there was a person who requested for a payroll from payroll services from me. So Okay. I gave him the payroll services. There was an agreement. Okay. He gave me a check. You have provided the manpower. I provided, no, he had manpower. He said, take my manpower on your payroll and deposit their PF, ESI and all those things, and I'll pay you. We made an agreement. Mm-hmm. So that gentleman refused to pay. 3-4 months. I stopped my services when I came to know that he's not doing that. Fine. So Fine. I was not aware about MSME and all this thing which you have discussed, all this thing. So I had to launch register a case of check bounce and all that. So Okay. now can I do this MSME wala and something? Will it help me? उसके non-available warrant है, he is not available. वो अच्छा, he had given this check bounce. Sorry, yeah, check. he had given me a check. Fine. I had taken this check because this was my this thing. So he said check has bounced. So, sir, I think if you were in webinar, I have quoted a example of Baba Housekeeping. तो उनका भी सेम ही था, same thing has happened. He has given the salary of all the employees, and the opposite party had made this agreement as well. वो check bounce का भी था, and this अब जो है उनका same MSME के अंदर हमने करा है, and proceedings are in process. So you can very well approach काउंसिल, बिकॉज ये सिविल नेचर का है। आपने जो चेक बाउंस का केस डाला है वो एक क्रिमिनल ऑफेंस है और ये एक सिविल है, तो साइमल्टेनियसली आप इसमें एमएसएमई में डालेंगे तो इसमें प्रेशर बिल्डअप ज्यादा होगा और इसका जल्दी आपकी जजमेंट भी जल्दी आ जाएगी। मुझे कैसे मुझे काउंसिल से बात करनी पड़ेगी सर? एमएसएमई काउंसिल सर आपकी स्टेट कौन सी है? My company is in Delhi, registered in Delhi. And अच्छा, दिल्ली में कहाँ पे सर? दिल्ली में नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट है, त्रिनगर इज अ प्लेस। त्रिनगर नॉर्थ वेस्ट, या तो सर इसका राजा गार्डन या फिर अलीपुर पड़ेगा। नो इश्यू सर, आप मतलब इसमें वो कंप्लेंट वो कर लीजिए, अलीपुर अगर पड़ता है तो हाँ, यो आपको पहले समाधान पोर्टल पे कंप्लेंट करनी है। ये मार्च 23 की बात है, मार्च 22 की, मतलब मार्च 22 में क्या हुआ था? मार्च 23 की बात है सर, मार्च 23 की। मार्च 23 में सर क्या हुआ था? मतलब उसकी पेमेंट 23 में सर्विसेज प्रोवाइड की थी और ये रिफ्यूज टू पे विदिन 3 इयर्स। विदिन 3 इयर्स, हाँ, विदिन 3 इयर्स यू कैन। तो अभी 3 साल तो हुए नहीं, 22 की है तो 25 तक है, तो यू नीड टू डू इट वेरी फास्ट। मतलब
थोड़ा जल्दी कर दीजिए। तो I'll have to approach वकील साहब से, किसी से बात करनी पड़ेगी। सर हमसे कर लीजिए, हम इसी में डील करते हैं, और मैं दिल्ली में ही हूँ और हमारा ऑफिस मतलब यही है, वेस्ट दिल्ली में ही है। तो वही यार, मतलब हम आपका जो काउंसिल है वो काउंसिल में भी मैं जानता हूँ वहाँ की वर्किंग वगैरह, सो आई बता देंगे आप। I'll be grateful if you can share your address and हाँ, वो मैम से आप कर लीजिएगा, इसके बाद कांटेक्ट, मैम विल कनेक्ट। Ma'am, I request you to do the needful, ma'am. You got my number and all that. Definitely, Colonel sir, if you could just write interested in the chat box, our team will connect with you after the session and we'll get you connected through Manish ji immediately. Thank you very much. Thank you so much. Okay. Thank you, Manish ji. सर We have the another question, please. I think it is Natraj ji. Would you like to ask the question, Natraj ji? Okay, this is Nikhil Parekh ji. You unmute Nikhil Parekh ji. Yes, Nikhil ji, please ask your question. You can unmute. Unmute Prem ji meanwhile. Ji, please ask your question. हेलो, हाँ, क्वेश्चन ये था, मैं थोड़ा से क्रिएटिव एसोसिएशन से I'm थोड़ा sorry, सर your voice is on echo. We are not able to hear you clearly, Prem ji. मैडम मैं मथुरा से बोल रहा हूँ, प्रेम सिंह क्रिएटिव एसोसिएट से। मेरा क्वेश्चन ये है, मैंने गवर्नमेंट के लिए डीपीआर बनाई थी 2009 से 10 के बीच। मैं बराबर उनके साथ में कुछ पार्ट पेमेंट उन्होंने मुझे किया गवर्नमेंट ने, और कुछ पेमेंट मेरा बकाया चल रहा है। तो मेरे द्वारा कई बार उनको नोटिस दिए गए, लेकिन बार बार वो कोई ना कोई बहाना लगा के टाल देते हैं। चाहते MSME से हमें इसमें कुछ बेनिफिट मिलेगा, अभी तक हमने इसमें नहीं किया है। फाइन। आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है सर? Manish ji, could you please put Prasanji ji on unmute because the voice is going on echo. Both of the speakers are on. Can you unmute Prasanji ji? Yeah. Yes, Manish ji, please go on. सर आपका मैन्युफैक्चरिंग है ना? सर मेरा कंसल्टेंसी का काम है, कंस्ट्रक्शन कंसल्टेंसी, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट। आपका सर्विसेज है, बेसिकली आपने उनको क्या प्रोवाइड करा है, मतलब कंसल्टेंसी प्रोवाइड करिए। कंसल्टेंसी में जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना जिस तरह की आज चल रही है, उस समय पहले जवाहरलाल अर्बन मिशन था, उनके डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाए थे। अच्छा, तो बेसिकली आपने सर्विसेज प्रोवाइड करी है। आपको उद्यम रजिस्ट्रेशन है सर? जी, उद्यम रजिस्ट्रेशन है सर? हाँ सर, उद्यम रजिस्ट्रेशन है मेरा। और उद्यम रजिस्ट्रेशन के बाद की ही इनवॉइसेज है ना? कुछ पहले की है सर, कुछ बाद की है। अच्छा, उद्यम रजिस्ट्रेशन से पहले उद्योग रजिस्ट्रेशन था? क्रिएटिव एसोसिएट के नाम से ही सर। हाँ, मतलब उद्योग था ना? हाँ 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 ठीक है। अगर उद्योग के बाद भी आपने इनवॉइसेस करी हैं, रेज करी हैं, तो आप MSME समाधान कर सकते हैं। एंड और मैंने जैसे बताया कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, तो इसमें तो आपको एज मिलती है कि उसके डायरेक्टर के पास समनिंग होती है। समनिंग इन द सेंस कि अल्टीमेटली अगर वो आते नहीं है तो एस्केलेशन जो है वहां तक चली जाती है, और एस्केलेशन जो है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस तक जाती है। तो मतलब उनकी सरकारी नौकरी थोड़ी खतरे में आ जाती है। तो सर हमारा ये, तो हमको कहाँ कंप्लाइंस करना है, पहले समाधान पोर्टल पर डालना पड़ेगा या क्या करना है हमें अभी? सर इसमें आपने बताया कि आपकी फर्म जो है वो मेरठ मथुरा में है। जी जी, यूपी से मथुरा। तो मथुरा में है ना? तो आपका जो काउंसिल है वहां पे जाएगी, तो बेसिकली आपको ऑनलाइन समाधान पोर्टल पे जाके कंप्लेंट करनी है। तो इन केस मतलब आपको वहां डिफिकल्टी आती है तो आप कनेक्ट कर सकते हैं मैम के साथ। मैम हमारे साथ कनेक्ट करवा लेंगी। दिस ऑल आई कैन से, बिकॉज
वी आर देयर फॉर, मतलब हम इसी काम के लिए हैं कि आपकी ऑनलाइन कंप्लेंट से लेके डिमांड नोटिस, लीगल नोटिस और जो भी आगे चीजें हैं वो हम आपको गाइड करते हैं इसमें। ठीक है सर, हम टाइम लेके आपसे मिलते हैं इस मैटर पे। हमारा ठीक है। 3-4 प्रेम जी, आप अपना अगर नंबर शेयर कर सकते हैं तो आप नंबर अभी शेयर कर दीजिएगा। हमारी टीम से अभी कोई ना कोई आपकी मनीष जी से बात करा देगा आजकल। जी सर, नंबर नोट कर लीजिए मैडम मेरा इधर से। आप उसमें लिख दीजिए चैट सेक्शन में, ठीक है जी। ठीक। थैंक यू, थैंक यू। So we have another question now. I think it's Chandresh ji. Please unmute Chandresh ji. Yes, now I am audible. Yes, sir. Yes, Chandresh ji, you are audible. Okay. सर, ये जो इंसॉल्वेंसी की जो प्रोसीडिंग होती है उसकी टाइम लिमिट क्या होती है? इंसॉल्वेंसी की प्रोसीडिंग्स एनसीएलटी में तो चलती है। हाँ तो सर, उसकी आपकी अपोजिट पार्टी इंसॉल्वेंसी में गई हुई है। हाँ जी, और 2020 में पब्लिक अनाउंसमेंट कर दिया ऑलरेडी। अच्छा सर, इसके अंदर देखिए बेसिकली जब भी प्रोसीडिंग्स चलती हैं आईबीसी में, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोर्ट के अकॉर्डिंग, वो सारी प्रोसीडिंग्स रुक जाती हैं टिल द पॉइंट जब तक वो डिसाइड होता है। बट एक्चुअली अभी लास्ट मंथ की न्यूज़पेपर में भी था कि जो प्रिस्क्राइब टाइम है, वो प्रिस्क्राइब टाइम जो है वो काफी इंक्रीज हो गया है। बेसिकली वो जो टाइम लेते हैं आपसे, वो सॉल्यूशन के लिए लेते हैं कि उस पर्टिकुलर कंपनी को अब क्या किया जाए। अब उसे बेचना है किसी को, या वो सेटलमेंट कर सकती है, वो खुद मतलब रिवाइव हो सकती है, या फिर फिनिश ऑफ करना है, या तो टेक ओवर करेगा कोई उस कंपनी को, या सेटल करेगी, या उस कंपनी को बेच के एकदम खत्म कर देना है। तो बट ग्राउंड रियलिटी ये है कि उसमें बहुत टाइम लग रहा है। तो बहुत कम केसेस हैं। ये अभी न्यूज़पेपर में भी आया था कि अभी वो जो लॉ है वो दोबारा से रिवाइव होगा, दोबारा से इसके अंदर चेंजेस किए जाएंगे। तो ऐसे टाइमलाइन नहीं है, बट ये अगर कि इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स अगर चल रही हैं तो फिर दिक्कत है। और वैसे भी अगर इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स चल रही हैं तो सबसे पहला जो पैसे मिलेंगे एसेट्स वगैरह बेच के, वो सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को मिलेंगे। वो सिक्योर्ड क्रेडिटर्स होती हैं बैंक्स। तो सबसे पहले बैंक का नंबर आएगा, फिर नॉर्मली इनसिक्योर्ड मतलब बायर का, मतलब आप लोगों का आएगा। बट इसके अंदर अगर मान लो इन टाइम, अभी तो आपका लेट हो गया, प्रोसीडिंग्स रुक गई हैं, लेकिन इन केस मान लीजिए आपने किसी के ऊपर केस किया एमएसएमई का, आपके हाथ में ऑर्डर आ गया है और उसके बाद वो इंसॉल्वेंसी में चली जाती है, तो आप सिक्योर्ड क्रेडिटर बन जाते हैं। आप जो है उनका, आपका और बैंक्स का सेम ही वो वेटेज हो जाता है। तो आइडली जैसे अभी रिसेंट हमारा केस था एक, उसके अंदर अराउंड 450 करोड़ बैंक के देने थे, तो 80 करोड़ पे ऑफर किया था, और जो बायर हैं उनको 1% ऑफर किया था। तो आइडली इंसॉल्वेंसी में गई है, तो फिर जो बायर नहीं, नॉट सेलर, जो सेलर है उनको 1%, 2% यही ऑफर किया जाता है, 5%। तो मतलब, और इसके बीच में जैसे कि डायरेक्टर मतलब सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन में एक्सक्यूज पाया गया, तो अपने डायरेक्टर के ऊपर में चीटिंग केस तो कर ही सकते हैं। हाँ सर, वो तो आप अपने जो भी एडवोकेट हैं और जो भी लीगल आपकी वो है, जो भी आपकी लीगली आप कर सकते हैं, यू कैन डू दैट। बट उसका फिर एमएसएमई से रिलेटेड कुछ नहीं है, वो आप इंटरनली मतलब आप करवा सकते हैं। इसलिए हमेशा ये तभी मैं अपनी प्रेजेंटेशन में भी बोला था कि कभी भी आपका बायर अगर नहीं दे रहा तो 3 महीने 6 महीने के अंदर अंदर आप उस पर केस कर लो, बिकॉज
बाय द टाइम अगर आप वेट करते हो, वी हैव सीन दैट 2 साल 3 साल बाद आप अगर वेट आप उनके ऊपर केस करते हो तो पता लगता है इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग स्टार्ट हो गई, या इन द मीन टाइम जब आपका केस चलेगा तब हो जाती है, तो फिर आपका केस जो है वो दैट गोज ऑन टॉस। और ये सिचुएशन में तो इंसॉल्वेंसी में यदि कंपनी है तो एमएसएमई में भी नहीं जा सकते ना अपने। नहीं सर, मतलब आप कोई प्रोसीडिंग्स, सारी प्रोसीडिंग्स रुक जाती हैं अगर इंसॉल्वेंसी में गए, बिकॉज बराबर ओनली चीटिंग केस हो सकता है बस। और ये जो उसकी जिसकी डायरेक्टर, वो भी आप डायरेक्टर पे कर सकते हैं, कंपनी पे नहीं, मतलब कंपनी हाँ पे डायरेक्टर पे डायरेक्टर पे डायरेक्टर पे कर सकते हैं, डायरेक्टर पे। बराबर। बट चीटिंग के केस के लिए ऑल्दो हमारे इससे रिलेटेड नहीं है, बट स्टिल मैं आपको उसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूँ जो मैंने अपनी वीडियोस में भी बताया हुआ है कि अगर आप किसी के ऊपर चीटिंग का केस कर रहे हैं तो सबसे मेन इंग्रेडिएंट जो है वो ये होता है, यू हैव टू प्रूव कि उसकी इंटेंशन जो है वो उसकी नहीं पैसे देंगे। Am I audible? मेरी थोड़ा सा डिफरेंट, प्लीज एक बार सर रिपीट कीजिएगा। मैं रिपीट कर रहा हूँ। देखिए, चीटिंग का केस अगर आपने किसी पे करना है तो आपको ये प्रूव करना पड़ेगा कि ट्रांजैक्शन के टाइम ही उसकी इंटेंशन नहीं थी पैसे देने की। हाँ वो है मेरे पास एविडेंस उसका है, प्रूफ है, तभी वो केस आगे बनता है। बिकॉज सी आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग एनीवन फ्रॉम एडवोकेसी, बट ऐसा देखा गया है कि आप किसी के पास भी जाते हैं, एडवोकेट के पास जाएंगे, वो कहेंगे हाँ हाँ कर लेंगे, चीटिंग का केस कर देंगे, और पता लगता है वो केस आप पैसे वैसे दे देते हैं, लेकिन वो केस जो है एक्सेप्ट ही नहीं होता, वो चलता ही नहीं। तो कोई भी अगर आपने केस करना है तो उसका बेस जो है वो स्ट्रांग होना चाहिए कि जो पर्टिकुलर उस सेक्शन के अकॉर्डिंग बनाया है। तो यू नीड टू हैव प्रूफ फॉर द फैक्ट कि उस बंदे की इंटेंशन जो थी वो पैसे देने की फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे थी। हाँ वन है वो, मतलब इंटेंशन स्टार्टिंग से खराब था, मतलब हाँ वो प्रूफ करना पड़ेगा आप। वो सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट ही है मेरे पास। हाँ फिर कर सकते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू सर। Thank you, Chandreshi. I think we can pick up another question. That is Pinaki Shahji. Please ask your question. Can you unmute, Mr. Shah? No, thank you. Very good evening. Please ask your question. No, thank you very much. No questions. Thank you, sir. Thank you. We have Radhesham ji. Can you unmute, Radhesham ji? Yes, Radhesham ji, please ask your question. Otherwise, we have Shrikant ji. So either of the two who's ready with the question can ask now. Please unmute Radhesham ji, or you can unmute Shrikant ji, please. Anil Shukla ji, you want to ask your question, Anil Shukla ji? Srikanth here. Shrikant ji, very good evening. Please ask your question. Yeah, see, basically we are into trading, but we add value add in the product. Okay, so we sell testing equipment, and where we calibrate, open the equipment and we do calibration, and if necessary, add some component. So we sold such component equipment to a company. So can we file under MSME Act? Are you registered in? Yes, yes. First of all, my thanks to you for attending this webinar. Sir, you have your UDYAM registration? Yes, yes. How you are a trader or a manufacturer registered in your UDYAM registration? In any case, you can change. Yeah, it is manufacturing.
Manufacturing, now you can take a chance on this because you're a manufacturing, you have added, value added. And is there any branding of any other company in the product which you are Yes, which you are yes. providing? It is a multinational brand. We are the distributor for it in Telangana. So we are service providers also. So we undertake maintenance on our own. Company don't provide service. So we are authorized service center. So we undertake service also for those products. And we have to calibrate according to the requirement. Each product, they come in as a box, but to suit the requirement of the client, we have to configure it and calibrate it and provide service for 1 year. See, for services part which you are providing, no doubt you can take that. There is no ambiguities or nothing, no fishy thing about that. But in case you can file it, in any case you can fight it. But in case branding is there of some other company on your product, then it might have a difficult have arguments with the opposite party. So you need to hire advocate and dig into that particular this thing and find out, is there any such thing which support the opposite party. In case, so, means you can file it, but again there is a chance of you can go on a toss, because the people who are in arbitration, I don't know about yours, what who is your arbitrator and what is the qualification is there in that state. So it might be a tricky thing, might be challenging. Okay. And fine. So second question, actually we try to file that case, okay, through MSEFC, but we are getting OTP say after 2 hours, 3 hours. It is taking long time for getting the OTP. We are unable to. You need to have patience. Sometime it happens, and try for regular 3-4 days, 4-5 days, and it try on 3-4 days, and it will come on time. It happens sometimes. I agree. And the third thing is another question in the continuation of this one. If MSFC doesn't accept this and limitation period is over, can I use this and go to civil court? What is your question? That your case is out of limitation? No, it is in limitation now, because it may take 6 months time for MSFC to come back to me for accepting or not accepting. Fine. See, the limitation says that you have not approached any authority, but yes, here you have, within the limitation time, you have approached a particular authority, and that authority said that this does not come in our jurisdiction, but you have made your point. So you can in case limitation problem comes in the civil court, you can easily, or you can confidently show them that I have filed a complaint within limitation, so this does not come under limitation is being counted. Yeah, because we lost some around 7 to 8 lakh rupees last year, because the client continuously says that he is going to pay, and once we see that limitation period is over, he keep on postponing, and suddenly we realize that limitation period is over and we are unable to do anything, and he is not responding now. Another client, I mean to say. So we don't want to take any chances now. So we want to do this legally. One thing. How he has said that he is going to pay? Has he given written communication to you? We will never give a written communication. Very big company group, Dr. Reddy's group. So BR Shetty's group. Let me tell you one thing. There is one exception in law of limitation, that suppose say within that 3 years, the opposite party gives you in written that he is going to pay. Then the limitation starts from that point, that day, that time, from where he has committed to you.
he always commits on telephone, because we gave almost every 1 month we send an email to them reminding about the payment. They called and they don't respond. So our person who visited them personally, he will promise them that he is going to pay very soon. That is the only thing. He will never respond to the email, but he only confirms to the person who is visiting for collection. He is clever now. If he has Yes. given in written, then you can counter this limitation. Yes, so he is very smart. He never gave in writing. So that's what I have told, that daily, there are my clients, and people contact us, and they say that 2 years have gone, 2.5 years have gone, let's wait for another month. In front of our eyes, this has happened. So the tag for going to application is 6 months. Believe me, if within 6 months he is not paying, initiate online complaint. Don't wait for that. So you can have mutual discussion, and you can tell that fine, my legal team has told you we can give you time, but go for the please file complaint. Yeah, agree. But for manufacturing, it is no problem. Services, no problem. But if they consider it as a trading item, so I'm supposed to get around 50 lakh rupees. Now I am forced to pay court fee also. Apart from this one, I paid GST. That is another loss. Now court fee is another loss for me. No, but I've said that you need to dig in this particular thing. It can come or it cannot come, but you need a strong legal team, or strong advocate who can find out the particular case law pertaining to it, in which it is being considered as manufacturing. So it is not something which is in black and white. But yes, you can find. Meet them personally and find it out. The arbitration chairman or somebody at MSFC, you can meet them personally and take clarification. No, sir. Actually, what happens is arbitrators' viewpoint, because this is a viewpoint, varies from arbitrator to arbitrator and state to state. So, okay, you cannot say what your arbitrator will think. You need to come up with proper case law and proper section and case law, settled case law in your favor. okay. Means you need to work on good advocate on this. Okay. You can find out the concerned case settled in your favor. Okay. So now I have to do research whether such cases have been taken or not. I have to speak to the advocate, because see, I am from Hyderabad. Hyderabad. Actually, Hyderabad is a very big city, but there are no industries in Hyderabad. In Hyderabad district, they have removed all industries and they have shifted to suburban. Now it is a separate district, and there is no MSFC in Hyderabad city. It is 60 kilometers away from Hyderabad city. It is some other district actually. 2 districts away, they have put the center. Even for other districts, there are 2 MSFC centers in Hyderabad, but for Hyderabad district, they have kept 60 kilometers away. This arbitration center. That is another challenge, because there is no cases. I was told that there are no cases. Nobody are filing from Hyderabad. So we are not keen on this particular thing. For that matter, I would suggest that we can have a chit chat individually on this. Surely, then I can, concentrate on your case better, I think. Yes, sir. I'll be in touch. I'll take your number. I'll be in touch. Okay. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Anyone else? Am I audible? Ma'am, you there? Yes, Manishi. I'm just like seeing if somebody. Sunny Ahuja ji, would you like to ask a question? Yes, please. Good evening, Sunny ji. Please ask your question. Hello. Hello, sir. Yes, I am Radhesham Goenka. मेरा एक पार्टी नोएडा की थी, तो उसने
उसके अगेंस्ट में हाई कोर्ट ने प्रॉपर्टी अटैचमेंट का ऑर्डर दिया था। हेलो, यस सर, आई एम लिसनिंग सर। हाँ जी तो सर, सुनाई दे रहा है। मैंने एडवोकेट सब्यसाची को किया था हायर, लेकिन उन्होंने कुछ ना केस का लिस्टिंग किया ना कुछ किया। 5 साल हो गया है। आप सर कहाँ बेस्ड हैं, और आपके जो अपोजिट पार्टी वो नोएडा में है? हाँ, मैं बॉम्बे बेस्ड हूँ। अच्छा, तो आप ये कह रहे हैं कि आपके फेवर का ऑर्डर आ गया था और एग्जीक्यूशन अटैचमेंट के लिए आपको मतलब यहाँ फाइल करना था। टी ऑफ ब्रांड पंडकपुरी। Apart from that, I don't drink tea. कोई नहीं सर, बाहर करना देना कर। हेलो हाँ, नोएडा। सनी जी, हाँ सनी जी, सुन पा रहे हैं मेरे को? हाँ, मैं सुन रहा हूँ। हाँ सर, सनी जी आप ये बताइए कि आपका केस सेटल जजमेंट हो गई, उसके अंदर एग्जीक्यूशन में नोएडा में कंप्लेंट डालनी थी नोएडा कोर्ट में, तो हाँ उसका स्टेटस के बारे में आप कह रहे हैं, मतलब वो पूछना चाह रहे हैं आप? हाँ, वो क्या है, वकील लापरवाही करके केस लिस्टिंग नहीं किया अभी तक। 5 साल हो गया। 25,000 रुपया उनका फीस भी भेजा था, लेकिन हुआ नहीं। सर इसके अंदर तो आपको एक बार मतलब एक बार अलग से एक बार देखना पड़ेगा। आई वुड प्रेफर कि या तो आप हमें कांटेक्ट कीजिए या फिर आप खुद नोएडा आके एक बार अपने आंखों के सामने या फिर किसी रिलायबल से ही दोबारा फाइल करवाइए। उसके अंदर प्रूफ करना पड़ेगा बेसिकली कि दैट वाज समथिंग ऑन ऑन पार्ट ऑफ द एडवोकेट हु हैज डन दिस, सो इट कैन बी टेकन फर्दर। हाँ सर, आपसे ही करवाना चाहता हूँ। सर वो मैम से बात कर लीजिए, वो आपको कनेक्ट करवा देंगे मैम सर। ओके, सनी थैंक यू जी, सर। सनी जी आप चैट में अपना नंबर छोड़ दीजिए, अभी हमारा टीम से आपको कोई ना कोई कांटेक्ट करके मनीष जी से आपसे बात करा देंगे। ओके ओके फिर आप उनसे ओके पर्सनली अपने पेपर्स चेक करा के आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है जी, ओके, थैंक यू थैंक यू, थैंक यू। So we have another question, Vibhu ji. Yeah. Can you unmute Vibhu ji? Good evening. This is Radheshyam. Good evening, Radheshyam ji. Hello, it is Vibhu. Okay, Vibhu sir, good evening. Please ask your question. गुड इवनिंग सर, सर। मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ कि हमारा मैन्युफैक्चरिंग भी है, कुछ मटेरियल्स का जॉब वर्क भी कराते हैं हम लोग, और कुछ मटेरियल्स में डायरेक्टली ट्रेडिंग भी करते हैं। सिर्फ मैं अभी तक मेरा कोई केस, एक आधा कोई केस था, वो कंपनी बाई चांस एनसीएलटी में चली गई, तो वो कुछ भी किसी भी लेवल पे नहीं जा पाया। लेकिन अभी फर्दर जो भी हम बिजनेस कर रहे हैं, आजकल ऑनलाइन कॉल्स वगैरह भी बहुत आती हैं, कहीं दूर स्टेट्स के रहते हैं, हम लोग मिनरल्स में डील करते हैं, राजस्थान में हमारा सेटअप है। तो कहीं दूर की पार्टीज को पकड़ना है या कुछ करना है, हम उन्हें पर्सनली नहीं कर पा रहे हैं, तो हमें क्या डॉक्यूमेंटेशन में क्या ध्यान, किन चीजों को ध्यान में रखना चाहिए कि हम शुरू से किसी नई पार्टी के साथ जब डील करना शुरू कर रहे हैं, तो हम डॉक्यूमेंटेशन में किन किन चीजों का ध्यान रखें, कैसे हम चीजों को प्रोसीड करके चलें कि आगे कभी कोई दिक्कत हो तो हमारे पॉइंट्स वैलिड रहे, और हमें क्या क्या टाइमलाइंस अपनी चीजों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे आप पेमेंट्स का बता रहे हैं कि 5-6 महीने तक अगर नहीं आती है, तो हमें 5-6 महीने के अंदर चीजों को स्टार्ट कर देना चाहिए किसी लेवल पर, खाली उसके वादों पे नहीं चलना चाहिए। तो इस बारे में थोड़ा सा गाइड करें कि कैसे हम सेफ साइड चल सकते हैं। बिजनेस तो करना ही है बहरहाल पार्टी के साथ में। ठीक है सर। सर एक्चुअली मैंने प्रेजेंटेशन के अंदर भी ये बताया था कि आपको कम्युनिकेशन का जो है वो रिकॉर्ड रखना है। तो आप अपोजिट पार्टी के साथ जो भी कम्युनिकेट कर रहे हैं, आइदर ईमेल और व्हाट्सएप के थ्रू करें, और प्रेफरली भी अगर आपके अपोजिट पार्टी जो है लिमिटेड कंपनी या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, तो उसका एमसीए से ना उसका डेटा चेक कर लो, जो एमसीए में रजिस्टर्ड उसका ईमेल आईडी है, आप उस पर रिवर्ट कराओ, और उस पर, या फिर कंपनी आईडी, कहीं के आगे कंपनी की होती है। तो ईमेल एंड व्हाट्सएप, सबसे पहला तो ये होता है कि हर चीज जो है वो आपके पास एविडेंस होना चाहिए। अभी रिसेंटली हमने एक एशिया पैसिफिक अपोजिट हमारी क्लाइंट थी, अपोजिट पार्टी थी, बेसिस ऑन ईमेल कम्युनिकेशन हमने वो पूरा केस जीता, बेसिस ऑन दैट। अदरवाइज बड़ा मुश्किल हो जाता, बिकॉज वो ईमेल की कम्युनिकेशन थी
बेसिस ऑन दैट द ऑर्डर वाज रिजर्व। तो आपको क्या करना है, आपको अपनी कम्युनिकेशन जो है, एविडेंसेस जो है वो पक्के रखने, और आप वैसे तो इसकी सर्विसेज भी होती हैं कि आप अपने अपोजिट जो पार्टी है उनका चेक भी कर सकते हैं। कुछ ऐसी एजेंसीज हैं जो आपको उनका हिस्ट्री भी बता देंगी कि कैसी हैं वो, पेमेंट टर्म्स उनकी कैसी, पेमेंट टर्म्स उनकी कैसी हैं। तो आइदर आप वो सर्विसेज ले सकते हैं या आप ये ले सकते हैं। और जैसे कि मैंने इनवॉइसेस और एग्रीमेंट्स में बताया कि अपनी इनवॉइसेस और एग्रीमेंट्स के अंदर जो भी आपके बिजनेस के अंदर सूटेबल है, जो भी क्लॉजेस हमने डिस्कस करे थे वो जरूर डालें। अब मैं सच बता रहा हूं कि केस जो हैं, बड़े से बड़े केस जो हैं सेटल्ड हो गए सिर्फ एक लाइन की वजह से। मतलब वो इतना बड़ा केस था, सिर्फ उसमें लिखा हुआ था ये। तो अपनी इनवॉइसेस और एग्रीमेंट्स को आप स्ट्रॉन्ग कर लो, उसमें एक लाइन लगवा दो। और दूसरा, 2 महीने 3 महीने के अंदर अंदर ये आपकी जो कम्युनिकेशन है उनके साथ वो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। तो दिस इज आई थिंक दिस यू कैन डू। देयर आर डिफरेंट पैरामीटर्स। बेसिकली आपको सबसे पहले उसकी क्रेडिट उसकी कितनी क्रेडिट वर्दीनेस है उसकी, वो चेक करनी है। तो वो आप चेक कर सकते हो किसी एजेंसीज के थ्रू। फिर आपको अपना जो कम्युनिकेशन है उसका रिकॉर्ड रखना है, एविडेंसेस रखने हैं ईमेल और व्हाट्सएप के थ्रू, प्लस उसको रिमाइंडर देने हैं। तो अगर आप ये सारी चीज करते हैं तो आप कर सकते हैं। प्लस इन केस अगर आपको लगता है कि आपको बहुत अच्छे लेवल पे करना है तो आप एक और काम कर सकते हैं, आप क्रेडिट इंश्योरेंस ले सकते हैं। ऑल्दो मतलब फिर हमारा काम नहीं आएगा। क्रेडिट इंश्योरेंस क्या होता है, वो आपसे कुछ प्रीमियम चार्ज करते हैं, और जो भी आपने क्रेडिट पे माल बेचा है अगर वो आपको पेमेंट नहीं करता तो आप उस इंश्योरेंस कंपनी से वो पैसा ले सकते हैं। तो लिटिगेशन जो होगा वो इंश्योरेंस कंपनी करेगी। वेल सेड सर, आपने बहुत सही सुझाव दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन हमने क्रेडिट इंश्योरेंस के लिए कई 3-4 कंपनीज को, इंस्टीट्यूशंस को ट्राई किया, बट उनके सर्टेन लिमिटेशंस है कि आप अराउंड 40 CR या 50 CR से ऊपर का आपका टर्नओवर अगर है तो ही हम आपको कवर करेंगे। स्मॉल टर्नओवर्स के लिए उनके पास में फैसिलिटी नहीं है। इस तरह की कुछ इश्यूज भी आए हैं सामने। तो अदरवाइज since a long time we are searching for credit insurance facilities. So can you suggest any few names जो कुछ 5 CR जैसे टर्नओवर के लिए भी जो काम करते हो? सर ये मेरा एरिया नहीं है, बट ऑन पर्सनल बेसिस मैं करा सकता हूँ। बट फिर आपको अगर आपका कम है, बिकॉज फिर आपका प्रीमियम ज्यादा पड़ेगा। आप जो कुछ स्क्रिप्ट ट्रेसिंग एजेंसीज होती हैं या फिर उनके कुछ अकाउंट्स होते हैं जो चेक होते हैं, जैसे सिबिल होता है, सिबिल चेक होता है, वैसे इनकी क्रेडिट हिस्ट्री चेक होती है। तो आप सिबिल चेक करवा सकते हो, अपोजिट पार्टी का पैन नंबर क्या है, इसकी क्रेडिट हिस्ट्री। अगर वो देखो टाइमली लोन पे कर रहा है, सारी चीजें हैं, तो चांसेस आर। और अगर आप किसी बजाय आप इसके जाने के, आप कुछ एजेंसीज जो होती हैं वो अगर हायर कर देते हैं तो वो आप इंडिविजुअल बेसिस पे आप उनका एक रेफ चेक पहले करा सकते हैं, वो प्रॉपर आपको उसकी वो रिपोर्ट दे देंगे। सो दिस इज द वे यू कैन वेंचर इनटू with new clients across pan India. This is actually the right way कि आपको पहले एजेंसी से उसका जो क्रेडिट वो है हिस्ट्री है वो चेक कर लेनी चाहिए। टाइप स्किप ट्रेसिंग एजेंसीज नियर बाय, तो आपके आसपास वो एजेंसीज आ जाएंगी। स्किप ट्रेसिंग एजेंसीज, जी सर, जी ठीक है सर। तो इसमें सर एक चीज और हम कर सकते हैं कि जब भी किसी नई पार्टी से शुरू हो तो हम, जैसे कई पार्टीज कहते हैं कि हम आपको चेक दे देते हैं, तो हमें चेक के लिए कुछ एक फॉर्मेट लिख के रखना चाहिए कि ये चेक किस चीज के अगेंस्ट आया है। जी, चेक के लिए आप अपनी इनवॉइसेस पे लिख दो, चेक्स आर सब्जेक्ट टू रियलाइजेशन। फाइन। तो कल को जब अगर चेक बाउंस का केस करते हैं तो मोस्टली वो यही प्ली करते हैं कि उन्होंने कैश में पेमेंट कर दी थी। तो इस पे मैंने जैसे बताया कि केस सेटल्ड है, सुप्रीम कोर्ट का केस एक सेटल्ड है, जिसके अंदर ये जजमेंट आई थी कि जब इनवॉइस पे लिखा हुआ था चेक्स आर सब्जेक्ट टू रियलाइजेशन, तब आपने
चेक वापस क्यों नहीं लिया? आप कह रहे हैं मैंने कैश दे दिया और चेक वापस लेना भूल गया। तो आपको तो पता था कि मैंने चेक दिया है और चेक जो है वो रिलाइज हो सकता है, मतलब वो लगा सकते हैं बैंक में। तो आप ये चीजें मतलब अपनी इनवॉइस और एग्रीमेंट में आप लिख सकते हैं। राइट सर, थैंक यू। I think we've come to the conclusion for today. Manish ji has been here with us, sparing his valuable time and so much insightful information today. So I would request, I think he's tried to answer each one of you with very much patience, and he's shared quite a much information for basics, what we require to move forward. You know, we all as a team here at UDYAMITA, including Manish ji and all the other experts we have, we all try to cover, like, we want you to find all the discussions, what we make here or the presentations we give to help you build your future further. We want to empower all the business owners and new entrepreneurs, you know, who move in the direction of realizing their goals. But often due to these little problems, you know, we take a back step. So here we have our experts on this platform, which help you all to, you know, combat some common challenges which arise in the due course of the time. So when we learn and share together, this platform is so important because there are a lot of issues which we might not be facing on us today, but there is somebody who's already talked about and has also got the solution. And we also get to know what to avoid and what to imply. So I think we will go, be requesting Manish ji for another powerful session soon. So if anybody is left, you can join us again with Manish ji. And for further questions who were not able to ask or who were wanted to ask personally, please let us know. We have pinned our number. You can contact UDYAMITA Helpline and we'll get you directly in touch with Manish ji. Of course, it might take a day or so because it will depend upon the time and availability of Manish ji when he will find it right and suitable to get back to you. So you can share and have, you know, con call or personal meetings with Manish ji, and I'm sure he will guide you throughout. So as a team, UDYAMITA Helpline, and from behalf of all the participants, we really like to thank Manish ji once again for being here and giving us such a powerful session and valuable informations, I think. Manish ji, would you like to say something, please? Nothing much, because already what I need to say, I have already spoken in my presentation and the chit chat with the with our members. So only one thing I just want to say, that you need to be proactive. You have to make a system right. That includes your invoices, you know, your communication, and you have to be very proactive here. Don't wait for 2 years or 2.5 years. Just take action after 5-6 months. This is all I want to say, and we are there to, you know, take care of that in case you get into that that problem. So that's it. Thanks a lot for being a very patient listener. So on behalf of Manish ji and Team UDYAMITA, I'd like to thank all the participants for being here with us on this platform, and for, we are really grateful for your time and engagement. So I would also let all the participants know that we are here to empower each one of you. So if there's any other issue on any other subject you want any expert advice, do mention in the comments so that we can invite that expert on that particular field to guide you and empower you. Thank you. Thank you, each one of you. Thank you, Manish ji, for joining us once again. Thank you so much. And we have, on popular request, we'll be having Manish ji soon with us. That's a promise. So, thank you. Thank you. Let's meet soon. Thank you. Thank you. Have a Thank you great very day. much, Manishi. It was a very interactive and educative section. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Thank you.